एसीटी देसी पे हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया लाने की जद्दोजहद में मैं सोचता रहता हूँ कि इस बार क्या लेके आऊँ आपके लिए। जैसे पिछली बार आपने अगर देखा हो या सुना हो मेरा पूरा शो, तो उसके अंदर मल्टीलिंगुअल मल्टीकल्चरल प्रोग्राम था, जिसके अंदर ऑज इंडिया फेयर जो हुआ लास्ट सैटरडे यानी 2 अप्रैल को, उसके बारे में हमने बात की। उनके प्रेसिडेंट जो फिनैक्ट के प्रेसिडेंट, उनसे बात की मिस्टर शांति रेड्डी से। उन्होंने अपने बारे में बताया, वो कैसे प्रेसिडेंट बने, उन्होंने अपनी 20-25 साल की लाइफ जो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में बिताई है वो कैसे रही, और कैसे वो डेवलपमेंट हुआ है इंडियंस एज अ कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया, और वो अब कहाँ पे पहुंच गए हैं, कहाँ से आए थे। तो उसी कड़ी को हम चालू रखते हैं, क्योंकि अब सीजन शुरू हो गया है इवेंट्स का, क्योंकि बहुत टाइम से इवेंट्स को दबा के रखा गया था, हमारी फीलिंग्स को दबा के रखा गया था एज एन इंडियन। और जो आप सब लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे होंगे, वो जानते हैं कि हम सबको इवेंट्स कितने पसंद है। 365 डेज अगर है तो 365 से ज्यादा इवेंट्स होते हैं ऑल ओवर द ईयर और ऑल ओवर द कम्युनिटी। तो इस बार भी क्योंकि ये न्यू ईयर का टाइम है, डिफरेंट वेज ऑफ न्यू ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में। स्प्रिंग का टाइम है, यहाँ पे ऑटम है वो अलग बात है, लेकिन स्प्रिंग का टाइम है और न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उगाड़ी होता है, बसंत पंचमी है, बैसाखी आने वाली है, और बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। तो इस हफ्ते भी एक ऐसा इवेंट हो रहा है जो काफी बार पोस्टपोन हो गया है, लेकिन उनको उस इवेंट का इंतजार काफी टाइम से लोग कर रहे हैं। उस इवेंट के बारे में हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स से जो एसीटी देसी पे पहले भी आ चुका है, और आप बहुत अच्छे से उनको जानते हैं और पसंद भी करते हैं। भाई उनका सेकंड नेम है, और पहला नेम क्या है वो हम बाद में जानेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा, और अब 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XX FM 98.3 पीपल पावर रेडियो। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वणक्कम, केम छो। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कहा था कि मैं एक ऐसे शख्स को लेके आ रहा हूँ जिसको एक्चुअली सब लोग पसंद करते हैं। इनफैक्ट मेजॉरिटी मैं खुद भी पसंद करता हूँ, और ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, काफी लोग जानते हैं इस बात को। और उनका जो सेकंड नाम है वो भाई है, और जो पहला नाम है वो है सैंडी। और मेरे साथ आज हैं सैंडी मित्रा, जिनको मैं पिछली बार मिला था तो वो प्रेसिडेंट ऑफ IAAC थे, अब वो चेयरमैन है। सैंडी भाई, वेलकम टू द शो। Good evening, Vikas bhai. Thank you for having Sandi bhai again. Always a pleasure to see your happy, inspiring, positive smile, brother. Right. Same here, brother. अभी आप मुझे ये बताइए, जैसे मैंने शो की शुरुआत की और मैंने कहा कि मैं पिछली बार आपको जब लेके आया था तो आप प्रेसिडेंट थे, अब आप चेयरमैन बन गए हैं। तो ये जो चेंज ओवर हुआ, ये थोड़ा इसके बारे में बताइए, थोड़ा फैसिनेटिंग है ये। क्या करे भाई, सरफरोज सैंडी भाई अभी ऐसे ही है, इंसेंट क्रेजी मैन। बस कमिटी ने सोचा कि probably Sandi bhai, I think you have done your bit. Now it's a time for you to look after the strategy, right, and promote the organization to go to its next level. Right. So that is the job, which they have given me. So just at this moment, I think lot more I'm trying to support my organization into the strategic part, and taking it down to the next level. So that's the role of chairman. तो अभी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा रोल है जो परमानेंटली फिक्स्ड है सैंडी के साथ। सैंडी को अब हम चेयरमैन देखेंगे IAAC का हमेशा के लिए। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। संगठन में बहुत सारी सोच है। हम जैसे कम्युनिटी लीडर्स लोग, it's nothing permanent. As soon as you are in that role, all you have to do is you have to tick all those KPIs, so there are KPIs. As long as I'm delivering it, I will be their chairman. The moment I will not be able to deliver it, I think the executives will take a decision that अभी सैंडी भाई का रिटायर होने का टाइम आ गया। वैसे भी आप देख लो, बाल सब गिर रहा है। देखिए, मुझे बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी रिटायरमेंट आप लेने वाले हो, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ आपको, आप काम से जल्दी रिटायरमेंट लोगे नहीं, और एक्स्ट्रा काम तो आप करते रहते हो, वो तो पूरी कम्युनिटी को पता ही है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। IAAC का ये जो एक इवेंट है, ये आई थिंक एक माइलस्टोन है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं इस साल। उसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये जो माइलस्टोन है वो क्या माइलस्टोन है।
अभिनव भाई, नहीं, सबसे बड़ी अभिनव नहीं हूँ, मेरा माइलस्टोन जो नाम है, विकास है, मैं ACT देसी विकास बोल रहा हूँ। so sorry, text coming from Abhinav. So sorry. But 2 more days for the event. So anyway, let me go back to the milestone, Vikas bhai. So basically, Vikas bhai, this organization was established in 1973. So in one way, this is our 58 years of anniversary. Right. So we thought, let's celebrate this special year. That is one of the reasons that we are putting up this great event together. But on this special year, हम लोग कुछ अलग से करते हैं. So the main purpose is basically, celebrate this special year. And then we have got 2 more different themes which will be delivering to the Canberra community. भाई, आपको याद होगा कि कोविड के टाइम पे कितने सफरिंग्स हुआ हम सब लोगों को. We have been probably the whole life just turned all the way around. But there were some people, there were isolations. हम लोग घर पे बैठे हुए थे, जहां जा रहे थे सोच रहे थे जाए या ना जाए, and so much of the things. लेकिन जो हम लोग बोलते रहते हैं ना कि we are all community leaders and community heroes so called, उस टाइम पे घर पे बैठ के मुझे एहसास हुआ कि भाई, there are some of these people, they are the heroes who are going beyond the mark and looking after, with the collective support of the government, looking after all of us, providing us free delivery of the food, going and supporting. There are so many other organizations as well, not even that, before that as well. Bhai, jab bushfire aapko yaad hoga, उस टाइम पे भी there are organizations who jumped in, जिस तरह से हम लोगों को look after किया. There was a time when I was isolated. All I had to do is matter of giving a phone call. Right. So I thought that these are the community heroes. How about we get an opportunity to thank all these heroes in a platform and just tell them that how much grateful we are. It was just a showcase of the gratitude. Right. So then we thought that maybe that can be a theme. Somehow, we had a panel. They have said couple of organizations name. However, at this moment, because for the short span of time, we couldn't identify all of them, but it will be an ongoing process. Right. Because why it will be an ongoing process. This is one of the things that we would like to thank all our COVID heroes and accord all our COVID heroes. The other thing is, because भाई, जब से मैंने ऑस्ट्रेलिया पाव रखा, although in India, हम लोगों को एक स्लोगन दिया जाता था, unity in diversity. लेकिन इंडिया is a big country, so much of the populations. मैं तो सिर्फ बंगाल के एक कॉर्नर पे था. मुझे ना proper manner से, because I couldn't travel state to state and all, I couldn't see that unity in diversity only staying in a small little local suburb in Bengal. Right. जब मैंने कैनबरा आया ना, I was touched, brother. I felt that Canberra is also unity in diversity. Australia is also unity in diversity. So we thought that maybe let's celebrate, saying that we Canberrans, we Australians, we are united, although we are diversified. So more than diversity, I should say, equity. So it's a bit more bringing up all the cultural performance together, communities together, and celebrating our 58 years of anniversaries with their blessings, saying that we Canberra, we are united. तो बेसिकली जो मुझे समझ में आया वो ये है कि एक तो बड़ा माइलस्टोन ये है कि IAAC जो 1973 में एस्टैब्लिश हुआ था, उसकी 50th एनिवर्सरी है, उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस इवेंट के जरिए. और दूसरा ये है कि जो कोविड के दौरान जो यूनिक स्टोरीज निकली थी, जो बहुत सारे न्यू हीरो सो कॉल्ड, व्हिच इज नॉट रियली कम्युनिटी लीडर्स बट फ्रॉम द कम्युनिटी हु हैव सपोर्टेड कम्युनिटी पीपल, उनको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं उनके कंट्रीब्यूशन का. और थर्ड ये है कि ऑब्वियसली इट्स एन इंडियन इवेंट, इन एन इंडियन ऑस्ट्रेलियन इवेंट, सो nothing goes without good food and some performances.
सो ये परफॉर्मेंसेस के बारे में हम और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि एसीटी देसी आपको पता है कि ये शो है और ये भी एक परफॉर्मिंग शो है जिसके अंदर कुछ अच्छे गाने, और वीकेंड पे आता है तो कुछ अच्छा होना जरूरी है। तो आप कहीं जाइएगा नहीं, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, हम वापस आएंगे सैंडी के साथ, और कुछ एक टॉपिकल मुद्दे भी है जिनके बारे में मैं उनकी राय लेना चाहता हूँ, बिकॉज एज अ कम्युनिटी लीडर ही हैज अ व्यू पॉइंट एंड आई वांट दैट व्यू पॉइंट टू कम अक्रॉस। तो आप है मेरे यानी आपके अपने देसी आरजे विकास के साथ, और ये है एसीटी देसी जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया, ओनली ऑन 2XX FM 98.3 पीपल पावर रेडियो। कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने सैंडी मित्रा जो चेयरमैन है IAAC यानी इंडिया ऑस्ट्रेलिया एसोसिएशन ऑफ कैनबरा के चेयरमैन, और उनसे मैं बात कर रहा था, और उनसे बात कर रहा था कि एक इवेंट जो होने वाला है 9th of April, राइट सैंडी भाई? यस, 9th of April। तो 9th of April को जो इवेंट होने वाला है उसके बारे में कुछ बात की, उन्होंने हमें बताया कि वो उसकी थीम क्या है, उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा और कुछ जानेंगे उस इवेंट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं एक टॉपिकल मुद्दे पे सैंडी भाई आपकी राय लेना चाहता हूँ कि एक कुछ टाइम से आप जानते हैं कि वर्ल्ड ओवर एक ऐसी चीज हो रही है जो अनफॉर्चुनेट है, जो होनी नहीं चाहिए थी, जिसको हम कहते हैं वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और उसमें 2 वॉरिंग कंट्रीज हैं जो यूक्रेन एंड रशिया सपोजिटली, और वो आपस में, वो तो कुछ एजेंडा है दोनों का जो जिसकी वजह से कुछ फाइट हो रही है, बट जो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है वो कम्युनिटी का हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके जो भी पैदा भी नहीं हुए, जो जस्ट पैदा हुए हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो 100 साल से उस लैंड पे रह रहे हैं और उनको वो सब छोड़ के पीछे जाना पड़ रहा है। तो इस ये जो त्रासदी हो रही है, या जो इनह्यूमन, या ये जो एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा कुछ आप कहना चाहेंगे? Because by only one of the thing which I'll say that what more we have to see. We already have seen going through still this unprecedented time. ये तो सबसे बड़ी वॉर है, कोविड तो सबसे बड़ी वॉर है, जहां पे मुझे पता नहीं लग रहा है कि ब्रदर ये जो I don't know much about the whole thing. Neither I'm interested to know. Correct. But ये कोविड जब the nature has declared a war against us, is it not the right time to be united and to showcase our support with each other? Just now भाई आप एक छोटी सी चीज सोच लो, पहले कितने सारे मुद्दे हुआ करता था, right, in the whole world. As soon as the COVID came, I have seen people disregarding the religion, caste, craze, anything. They are all jumping and uniting and trying to help each other. Canberra as well, we have seen that. Everybody is jumping, okay? जब हमारी वतन के अगेंस्ट में कोविड आ गया था, पूरा वर्ल्ड ने, जब हमने लास्ट ईयर को कोविड में we wanted to raise some fund for India, पूरी वर्ल्ड से लोग आ गए in Canberra to support that. So to me at this moment of time, bhai, I have always been a believer of Gandhi, and I will always say that I personally, without taking any support, I don't appreciate the war. It shouldn't have happened. Those who are trying to initiate, I just find it that it's nothing but a kind of spreading their influence, spreading their power, spreading their autonomy, and which is pointless at this moment. Right. यार एक टच से दुनिया खत्म हो जा रहा है। Correct. और आप जंग की बात कर रहे हो। Correct. So to me, मेरी भारत जैसा है, my India has always been against of any those sort of activities, and that is why I think I support the Ministry of India for trying to preach the word of peace. तो इसी को पॉइंट को लेते हुए थोड़ा सा मैं इसमें आपको थोड़ा होल्ड करूंगा इस थॉट को, कि आपने जैसे बोला, इसमें ही कुछ ऐसी मुद्दा है जिसमें काफी लोग बोल रहे हैं वर्ल्ड ओवर, और काफी टाइम से बोल रहे हैं कि इंडिया का जो स्टैंड है, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में भी, और ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड तो सबको पता है, दे आर लाइक सपोर्टिंग यूक्रेन, सेंडिंग आउट ऑल दोस थिंग्स एंड ह्यूमैनिटेरियन एड्स या वेपन्स या व्हाटएवर दे रिक्वायर, दे बीन, बट इंडिया के स्टैंड को लेके
काफी जगह से थोड़ा क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है और काफी लोग बात कर रहे हैं, उस स्टैंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज as Russia as a close ally of India for a lot of other reasons, but Ukraine is a friend also. But ये जो स्टैंड है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप, जो इंडिया ने स्टैंड लिया है इस वॉर के लिए? भाई, look, as on that ground of the stand, what I can say is, अभी जस्ट यार कोविड से फाइट होके आप देख चुके थे यार लास्ट ईयर को क्या हो रहा था। घर घर आग जल रही है चारों तरफ। कोविड में तो इतने थक चुके हैं हम। पहले घर को संभालें या टाइम दे दीजिए। इंडिया को थोड़ा टाइम देना चाहिए। कोविड से अभी उठे नहीं, फिर से दूसरा आ गया, फिर से तीसरा आ गया। पहले घर को संभाल लेते हैं और उसके बाद बाहर देखते हैं ना। अगर आपकी फैमिली में जैसे हम दुनिया में पीस स्प्रेड करते फिर रहे हैं, ये कीजिए वो कीजिए, अगर हमारे घर पे ही अशांति है, हमें तो वहां पे फोकस करना चाहिए ना। सो आई थिंक whatever decision Ministry of India has taken, we are quite renowned in the world being a 9 billion or 9 trillion economy. We know what we're doing best. Correct. So basically it's what you're trying to say is that as a country which is always a believer of, has been a believer and is still a believer of peace and unity and diversity, we don't want war, and we don't want to be part of the war. But there has always been supportive stance that India has taken. So there in terms of humanitarian aid, or in terms of when vaccines were required during COVID times, India was the one supplying it to third world countries and the other countries as well where they needed vaccines. So I think everyone has the right to first look at their own house in order to enable to वो कहते हैं ना कि हमारे में तो I think जो लोग सुन रहे हैं और जो जिनको पता होगा या जो लोग इंडिया में पले बड़े हैं उनको पता होगा कि हमारे एक प्रेयर हुआ करती थी, या जो हम बोलते थे कि हमको मन की शक्ति देना, मन भी जय करे तो दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। कि भाई अगर हम दूसरों की तो जय करना चाहते हैं, बट अगर हम खुद ही सक्षम नहीं है तो हम किसकी हेल्प कर पाएंगे? करेक्ट। So I think this is the mantra that they have taken, and I think people will understand and people are understanding. Australia is very understanding as a partner. ऑस्ट्रेलिया इंडिया के बारे में हम और बात करेंगे। एक और चीज है जिसपे हम सैंडी भाई की राय लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं जाइएगा नहीं, आप हैं मेरे और सैंडी भाई के साथ ACT देसी पे, जो आता है हर शुक्रवार रात 8:30 बजे इन कैनबरा और 4 बजे इन इंडिया। कहीं जाइएगा नहीं, मैं बस यूं गया और यूं आया। सैंडी भाई, वेलकम बैक। एक और मुद्दा, जैसे हमने बात की थी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है बहुत रिसेंटली, इनफैक्ट 2 दिन पहले ही, और जो आई थिंक चला रहा था काफी टाइम से। इसके कुछ तो हाई पॉइंट्स तो ये हैं कि मतलब अब टैरिफ्स एंड ट्रेड्स एंड जो टैक्सेस हैं वो कम हो जाएंगे, और 12 बिलियन डॉलर की पर ईयर की जो डील है, विच कैन बी further. I think our minister, Mr. Piyush Goyal, is in Australia right now while we are talking, and then they are, talking about these historic milestones that we have achieved, which can go further to $130 billion a year by 2030 is what they are projecting. तो इस जो डील हुई है, इसको लेके भी कुछ एक साइड ऐसी है जो कम साइड है, मतलब कम लोग हैं जो थोड़ा अगेंस्ट है इसको लेके कुछ सर्टेन चीजों। I mean obviously there will be people who will be there will always be people who will be saying something against something, but what do you make out of all these the sanctions or the taxes that have been taken off, and what is the future of this, and how do you see this happening? Very interesting question, because bhai, see, look, about when I'm saying when let's start with the criticizer. Okay, so the leadership has always believed that if you have to make everyone happy, please go and sell ice cream. उसमें भी ऐसा होता है ना कि आइसक्रीम ज्यादा ठंडी नहीं थी या पिघली हुई थी तो वो भी पसंद नहीं आती कभी। That is the thing, and when all this sort of journey takes place, brother, there are people who always thinks that your dream of doing something good, interfering in your dream is their personal business. Right. But their opinion
never changes the reality Correct. of life. The reality at this moment is India and Australia bilateral relationships is been seeing the needless changes for, especially for last few years. Right. Brother, to me at this moment, as I said, when I came to this country, I have committed myself with few other dedicated and passionate visionary soldier of IAAC that will serve the rest of our life for our motherland, India, and our adopted homeland, Australia. I'm really excited about this. Brother, look, because the reason is why I'm supporting this. This is, vision and mission that to bring both the two nations together, to celebrate the comradeship, to celebrate the commonalities, to celebrate the Westminster style of democracies, to celebrate the pluralistic side of the whole, both the two nations, a lot of things. So there are commonalities. Why I'm supporting this, brother, look at the kind and the type of employment opportunities this will create in India. Okay, so take example, कोई एक example दीजिए कि how will it create employment opportunities in India? By, although I recently didn't got the chances to look into a couple of things, I just know that this is happening as because, for this upcoming event. Let me give you fisheries. Let me give you a little context to this so that you will probably be able to. They are saying that most of the taxes, about 85% of the taxes will be reduced in fisheries, in wines, in wool or maybe meat industry. So this is kind of thing, and plus they're like for students, for STEM students, for extraordinary students who are studying in Australia, they will get more time to do some kind of employment opportunities with more time for them to be in Australia and get some exposure. But इसी के साथ एक related question है जो मैंने बोला criticism की बात आती है, वो ये होती है कि कुछ एक जो section है वो ये बोल रहा है कि जो हमारी jobs हैं और local Australian jobs हैं उसको खतरा है इससे, और इससे मतलब local people will be affected. What do you think about this? Look, what, as I said, for those people, what I can say that this project is going to reach out to that 1.4 billion Indian populations. Right. Okay, at this moment. What does that mean is an employment opportunities. What that brings up is a strong globalizations opportunities within the trade. What that means that, two nations are coming together. For those people, who are probably against it, I don't want to be, demographically or countrywide, I don't really want to criticize, but there was a long time back, brother, I think in my, during the time when I was doing my degree, there was a word of Philip Kotler. I don't know if you have heard about Philip Kotler. And he used to say one word that, think globally, act locally. I don't really understand from what aspects at this moment, although as I say, brother, all I'm saying that, the opportunities after opportunities, I haven't really gone deep down. I'll probably have that some time after my 9th of April. I know you're busy with this big mega project, so I can understand. It's just an off like a that's right. So don't get bugged. I just want to take your viewpoint on this. I really, brother, and I mean, and thanks for asking the question. But as I said, all I can see that through this project, we, people who have chosen Australia as their homeland, यार वतन छोड़ दिए, कुछ करने का तो मौका नहीं मिल रहा यार वतन में. कोविड आ गया यार, यहाँ पे बैठे हम लोग क्या करें, जा नहीं पाएंगे, रो रहे हैं, ये रहे हैं, देख रहे हैं टीवी, करने का मौका नहीं मिला. लेकिन इस प्रोजेक्ट के थ्रू में with our homeland Australia, we are helping our motherland India to create some employment there. Right? But also, I think one of the major things we have to also understand from Australian point of view is Australian economy is highly and hugely dependent on immigration as a sector. Billions of dollars every year comes through education, comes through immigration,
And when you open up these, special sectors, people will be traveling, there will be dollars earned, taxes gathered. I mean, I remember last कुछ time पहले मैंने एक शो किया जिसमें मैंने बोला था कि Indians or Indian, based Australians are the second largest tax paying people in Australia. So that 100%. kind of taxes is what Australia is getting help with, right? So when more people come, they will earn more, they will pay more taxes, and then the country's future will be more secure, because that's what it is, right? As well, also because that's a very good analysis on your part. And if you look into the Peter Varghese report, the 4 sectors has been identified, when you build up a relationship. And you're right, exactly. Only the 2 things, which probably I would like to add up on top of the 2 things which you have added is retail and tourism. Correct. Yeah. As well, health. Sorry, you covered the tourism. Health. Okay, so retail and health. So if you look into that, I think it is probably 300-400 pages. Peter Varghese has, or Australia had a project with India, state by state, state by state, state by state. And what I can see is at this moment, when you're looking into those components, all I can see that all these boxes are ticking between our homeland and our motherland. Right. All the boxes are ticking. It's just a matter of time. Right. So I'm quite optimistic about this whole project. Let's see what new it brings to these relationships. Right. So we are always optimist about things that are happening, because we as community members of the society, we want to do good. We want to bring out good in the community. We want to bring out good for both the countries that we belong, and help everyone who we can see and in and around us. तो ये जो शो है अब ये इस तरफ बढ़ रहा है अपने अंतिम चरण की तरफ, और उस अंतिम चरण में हम वापस आएंगे वहीं पे जहां से हमने शुरुआत किया था, गोल घूम के। जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया इवेंट जो हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे क्विक, और एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, और सुनिए ये बहुत बेहतरीन सा गाना आपके लिए ऑन ACT देसी। मैं हूं आपका अपना देसी RJ विकास। सनी भाई, थैंक यू सो मच, आपने इतना हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। मुझे मालूम है कि मैंने आपको खींच के निकाला है आपकी एक के बाद एक मीटिंग्स के अंदर, और ये टाइम लिया है, बट मैं चाहता था रियली कि ये जो आपने थीम बताई है आपके इवेंट की, जो कोविड हीरोज को आप फेलिसिटेट कर रहे हैं, आप उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द कम्युनिटी टू सी, एंड इट्स अ different kind of an event altogether. I mean, although it has the same or similar elements which are there in all the Indian events that we organize, like food and dance and multicultural and all those kind of things, but this is one of the important thing which has come out during the last 2.5 years now, of COVID heroes that have come out and supported the community, and you are felicitating them. कुछ 1-2 नाम आप बताना चाहेंगे ACT Desi पे एक्सक्लूसिवली अनाउंस करना चाहेंगे, या आप चाहते हैं कि 9 तारीख को अनाउंस करेंगे? Like every other organization, because we are also obliged with privacy. And we need to respect that. I wouldn't have got any problem, but I think the COVID heroes probably just want to surprise. Right. And they want to feel that special way. Right. Yes, we are here. But yes, we have tried to cover up quite a wider aspects. We have identified 10 COVID heroes and the organization as well. So you are my guest as well. वो तो मैं जब आऊंगा आपके इवेंट पे कवर करूंगा ही कि कौन कौन है, और वो सबको पता चल ही जाएगा ACT देसी के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि चलिए आप स्पेसिफिक टू द इवेंट बात करते हैं, कि चले इवेंट का एक रन डाउन दे दीजिए और बताइए सबको। ये मुझे पता है कि सीट्स तो अवेलेबल नहीं है, सीट्स तो फुल है, और काफी लोग अभी भी क्या चाह रहे हैं कि टिकट मिलना, लेकिन टिकट ऑब्वियसली नहीं है। तो वो तो मुझे पता है ये फुली स्टॉक एंड लोडेड इवेंट है, तो बहुत टाइम के बाद आप पीपल वर एक्सपेक्टिंग, एंड इट्स अ फुल हाउस शो। बट इवेंट पे शुरू से लेके एंड तक आप क्विकली, अगर मुझे 2 मिनट में आपको हमारी ऑडियंस को बताना हो कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इवेंट पे, तो प्लीज गो अहेड। Yeah, beautiful. Okay. So Vikas bhai, we are requesting all our valued audience to be there at 4:30 at least, to be there, just be at the gate. Right. Because I think we are expecting around 200 occupancy. Mm-hmm. So 4:30 till 5:30 will be meet and greet. Right.
We have got, couple of mainstream media as well, who will be supporting on that day. 4:30 till 5:30, meet and greet starts. You'll see, lots of refreshment, and you just know each other, a bit of intermingle. Correct. Then I think we start the event sharp at 5:30, sharp dotted. Even if it's only Sandi City, we'll start because the event is quite jam-packed. That's the way it should be, not Indian standard time. That's just so far, cross finger. Oh my God, now I've jinxed it. So we'll start with that, and then we have got a few honorable parliamentarians, both from the federal and the ACT Assembly. They will be honoring us. So they will be, honoring us with their speech that will probably continue for 10 to 15 minutes. Right. After that, we have our lighting lamp traditional ceremony. Okay. The beauty of this time lighting lamp ceremony is we have been able to identify all our friends of IAAC बोलते हैं उसको. मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादा रिवील करें, बिकॉज वो फिर पूरा इवेंट का जो वो खत्म हो जाए. आप मुझे बस क्विकली ये बताइए कि चलिए फेलिसिटेशन हो गया, पार्लियामेंटेरियन आ गए, उसके बाद उसके अंदर आप फेलिसिटेट करेंगे कोविड हीरोज को, या वो एंड में होगा, या कोई एक हाईलाइट बताइए इवेंट की. फेलिसिटेशंस डिनर से पहले ही हो जाएगा. Right. लेकिन सिर्फ felicitations or formal is not going to be the exciting part. The beauty and the exciting part is flavor, touch. You have got your Bollywood, you have got the Kokoloko, you have got the Brazilian Zambuca, you have got the African dynamics, you have got the dragon dancer, you have got the Mompasino Colombian. So the beauty of the appreciations of the culture. ऐसा भी हो रहा है brother. You can see Indian people dancing in the Latin. तो बेसिकली ये आपने एक मल्टीकल्चरल फेस्टिवल बनाने की कोशिश कर दी. फेस्टिवल तो दूर की बात है भाई, लेकिन एक बात है कि हमारी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, सोच भी छोटी रखते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि लेकिन थॉट्स बहुत पुट करते हैं उसमें. अगर 5 भी लोग हुआ तो 5 भी हम लोग यूनाइटेड अप्रोच पे बढ़ेंगे. चलिए, तो आप सब लोग जो सुन रहे हैं ACT देसी और जो देख रहे हैं, आपने सुना कि 9 अप्रैल यानी कि सैटरडे को ये इवेंट होने वाला है. और इवेंट क्योंकि अब ऑलरेडी बुक्ड है, तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप अपनी सीटें बुक कर लीजिए, क्योंकि सीटें ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं. लेकिन इस इवेंट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मैं दूंगा जब मैं पार्टिसिपेट करूंगा इस इवेंट में, और आपके पास लेके आऊंगा थ्रू ACT देसी. और सैंडी भाई ने जैसे बता दिया कि ये इवेंट मल्टीकल्चरल फ्लेवर के साथ आ रहा है, कोविड हीरोज को सपोर्ट कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं, फेलिसिटेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं फ्रॉम पार्लियामेंट, बोथ फेडरल एंड ACT. तो डू ट्यून इन टू ACT देसी एंड कीप ट्यून्ड इन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इवेंट. And Sandi bhai, once again, thank you so much for taking out time and being my guest on ACT Desi. I think it's almost a year. I remember last year around 2021 मैंने न्यू ईयर में आपका इंटरव्यू किया था, और उस टाइम हम आपके बारे में कुछ जाने थे. और अगर आप वो शो देखना चाहते हैं तो वो ACT देसी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. आप जरूर देखिए और जानिए सैंडी भाई के बारे में कुछ और, क्योंकि एक डायनामिक पर्सनालिटी हमारे साथ आज बैठी है. तो थैंक यू वंस अगेन सैंडी भाई, और आप सब लोग जो सुन रहे हैं, आप सबको का भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपने ट्यून इन किया फिर से ACT देसी पे. बने रहिए मेरे साथ, और अपने राय और फीडबैक या कुछ भी कमेंट आप करना चाहते हैं तो यू कैन शेयर विद मी ऑन माय फेसबुक पेज विच इज ACT देसी FM, या info@content-artist.com पे भी आप मुझ तक पहुंच सकते हैं. तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच सैंडी भाई वंस अगेन. शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट. Good night.